मैं This बता दूंगा, conference कोई will प्रॉब्लम now नहीं। be recorded. हाँ जी, गुड मॉर्निंग शिवांगी। अगर अगर स्टिल प्रॉब्लम आती है तो संदीप भाई बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is Maven and Apache POI. So what is Maven? Maven is a builder tool which is used to maintain the project dependencies or project jar files. हाँ जी कुणाल, क्या काम है मेवन का? It is a build tool which is used to maintain project dependencies. प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज और प्रोजेक्ट जार फाइल्स। हाँ जी, क्या काम है मेवन का? मेवन इज ए build tool which is build used to to maintain। हाँ जी दर्पण project प्लीज। jar file. हाँ, now question is here, there is a concept of library. What do you mean by library? Library Which set of jar files? which provides the built-in classes and methods. What do you mean by jar file? What do you mean by library? Which provides built-in classes and methods. For each library there is corresponding jar file. हर लाइब्रेरी की corresponding क्या होती है? jar file of that library, है ना? हर लाइब्रेरी की corresponding क्या होती है? Jar file. jar file। और हर जार फाइल की corresponding क्या होती है? Maven dependency of that jar file। हर जार फाइल की क्या होती है? गुड मॉर्निंग जी, लेट मी एक्सप्लेन Maven अगेन। dependency of that jar file. हाँ हाँ, स्टार्टिंग में व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी? which provides the built-in classes and methods, right? For each library there is corresponding jar file। हर लाइब्रेरी की corresponding क्या होती है उसकी? हाँ जी, क्या होती है? Jar file. jar file। For each jar file there is corresponding Maven dependencies। हर जार फाइल की corresponding क्या होती है उसकी? Maven dependency. Maven dependency। If I want to use the library, then there are two ways for using that library. Either we can attach the jar file of that library manually using build path option। पहला ऑप्शन क्या है जार फाइल को अटैच करने का? हाँ जी, पहला ऑप्शन क्या है? Build path. Manually. मैनुअली। एक मिनट, एक मिनट रुकना। हाँ जी, either we can attach the jar file of that library manually using build path option after downloading the jar file from कहाँ से करोगे?
Google, or you can give the Maven dependency of that jar file, and Maven will download the jar file by itself, and it will attach the jar file with the project. किसी का डाउट? हाँ जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। हाँ जी, सब लोग एक बार अपडेट करो। Deepak, for that Maven dependency, can you show that practically how it is? Yeah, First one is okay. Yes. For the second approach, our project must be of type Maven project. Which type of project we must have? Maven project. Maven project. Maven project. There are two ways for Maven project creation. First one, you can convert your Java Java. project into A Maven project. Maven project, or you can create a Maven Maven project from scratch. कितने वे Maven project बनाने के? Two ways. Two ways, right? Let me show. So we have a project. Let me create a. This is a project ABC. Which type of project is this? Which type of project is Java this? Java Simple Java project. project. Java. Java project. Right? First way, but which is the first approach? Convert Convert Java the project Java. to Maven project. Convert your Java project Java into Maven project. right. So let me do. Right click on the project, then configure, and which option? Which option? Convert to Convert to Maven. Maven. Convert to Maven project. Then finish. First approach. Right click on the project, on the Java project, then configure, and then Convert to convert Maven to project. Maven project, Maven project. right? And second approach, To create a Maven project from scratch. how we can create? As we create a Java project. file, new project, and which type of project? Maven project. Maven project, right? Now, as of now, we are going to use which approach? Second approach. Create a new Maven project. Yes, right? Now, in case of Maven project, we will get a file named. In case of Maven project, we will get a file named pom.xml. Which file we will get? Pom.xml. When we will get this file, pom.xml? When we convert Java project into Maven project. Yes, or our project, we are created a Maven project from scratch. We will get a file. What is the name of the file? Pom.xml. 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 You can see this is the file, right?
Now we want to work on which library? We are going to work on Apache POI library. Which library? Apache POI library. Apache POI is the library used for handling the XLSX. XLSX format, right? So there are two ways for attaching the jar file of Apache POI library. How many ways we can attach the Apache POI library? So it's Two ways. Two ways. First one, we can download the Apache POI jar files from the Google, and we can attach using which option? Build path manually. Second one, what is the second one? Using Yes, what? path. No, we can take the Maven dependency of the Apache POI library, and we can give those Maven dependency to the pom.xml, and Maven will download the jar file by itself, and it will attach with the प्रोजेक्ट. कौन करेगा हमारे लिए भी टेक केयर? कौन करेगा? Who will do this activity? By itself Maven project dependency. Yes. Any doubt, anyone, please? है ना? चलो. Now, what we required? Mira, what we required? We required the Maven dependency of the Apache POI library. What we required? क्या चाहिए हमारे को कैलाश? Nitin, what we required? Kunal, Maven what we dependency of required? Apache Yes, POI library. yes. And one more thing, where Maven will keep the jar files in your system. कहाँ पे रखता है Maven? एक ये भी एक पॉइंट है. Maven will keep the jar files into .m2 folder. Maven jar file कहाँ रखता है? Where? .m2 folder. .m2 folder. So before downloading the jar file, Maven will check the jar file inside .m2 folder whether it exists or not. If it exists, then it will not download. If it does not exist, then it will download it will download and will keep the copy of the jar file where? M2 folder, not M2 folder. Into .m2 folder, right? Now हमारे को क्या चाहिए? अगर जार फाइल चाहिए हमारे को तो क्या चाहिए? अपाचे पोई की क्या चाहिए? Maven dependency.
Maven dependency. You can take this dependency from Google as well. कहाँ से ले सकते हैं हम ये? कॉपी. लास्ट टाइम हमने कौन सी लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करा था? हाँ जी, एक्सेल कौन से वाली में? जे एक्सेल पवन भाई कौन? लाइब्रेरी JXL लाइब्रेरी. आज कौन सी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं? चिप Apache. Apache Poi. हाँ, तो अगर मेरे को गूगल से लेनी है तो वी हैव टू गो टू द mvnrepository.com. वेयर? कहाँ जाना पड़ेगा? mvnrepository.com. mvnrepository.com. यहाँ पे देखो JXL. दिस इज द लिंक. यहाँ क्लिक करो. एंड विच वर्जन? 2.6.12. So these are the Maven dependency of which library? These are the Maven dependency of which library? JXL. बताओ भाई. JXL. और हमारे को किसकी चाहिए? Apache Poi. Apache Poi. Right. Now copy this dependency. Google से निकाल रखी है मैंने. Copy this dependency. And where we will keep this? Where we will paste? pom.xml. Good one. Go to the pom.xml. Below version tag. Version tag से नीचे press enter and put a tag dependencies. Which name? Which tag? Dependency tag. Dependencies. और इसके बीच में क्या करोगे? किसकी डिपेंडेंसी Dependency space डालोगे? can Apache Poi. अपाचे पोई की. कंट्रोल एस करो, सेव करो. कंट्रोल एस. देखना सारी जार फाइल डाउनलोड हो रही है. होगी. मेवन ने सारी जार फाइल डाउनलोड करी या नहीं करी? सर होगी. Poi दीपक वो XML आ गया. Exactly, Dipshika. Exactly. There are two ways for attaching the jar file. You can download from Google and you can attach manually, or you can give the Maven dependency of the required jar, and Maven will download the jar file by itself. Deepak, one question. Yes, please, Mira. This Apache Poi, this is what all jars it is getting. For example, JXL is for Excel, right? This Yes. Apache For Poi for Apache what all? Poi, all this jar file required, all this dependency required. Oh, you mean all the mandatory, all the Yes, required ones, generic yes, ones yes. like we used to, old and new jars, that all. Exactly. Okay. Like you can see here, artifact ID POI, POI OOXML, POI OOXML schemas, right? This dependency I have taken from the Google. So Deepak, with time, we get the versions can be upgraded, right? So any difference if we use the latest version? Or... No. Let's suppose if you want to download from the you want to download the latest one, you have to change the version. Yes. So any difference between the latest version and if we use the previous version? There will be some change. If there is some change, that's why let new version come into the market, right? अगर आप देखोगे नया वर्जन कब आता है, हमारा ब्राउजर का वर्जन भी कब आता है? जब कुछ चेंज होता है उसके अंदर, राइट? Yes. Okay. ठीक है ना? हाँ जी मीरा, योर क्वेश्चन इज क्लियर? आंसर इज क्लियर? Yes, Deepak. Yes. Deepak. Okay. Any other doubt? Anyone, please feel free to ask. Divya, things are clear to you? Yes, sir. Okay, ji. Now, where Maven will keep the jar file in the system? Meena? .m2 folder. .m2 folder. Good one. Go to window R, press window R. Here you need to mention .m2.
You can see all this jar file. Who has downloaded? Kunal, who has downloaded this jar file? Maven. 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 If you face any problem while attaching the jar file using Maven, there is a solution. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या सॉल्यूशन है? डिलीट द .m2 फोल्डर. m2 फोल्डर को क्या करोगे? डिलीट करेंगे. डिलीट करेंगे एंड वी विल अपडेट आवर प्रोजेक्ट. डिलीट करने के बाद क्या करना होगा? प्रोजेक्ट अपडेट. Project update. प्रोजेक्ट को क्या करना होगा? हाँ जी, प्रोजेक्ट को क्या करना होगा डिलीट करने के बाद? अपडेट. Update. अपडेट. कैसे करते हैं? Right click. एक मिनट. We will update. Right click on the project, then Maven, right click on the project, then which option? Maven, and which option? Update. Update project. And here force update and click on the OK button. Clear है सबको? Yes. हाँ जी. किसी का डाउट? सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज. आगे मूव तभी करेंगे. जार फाइल अटैच कर ली? किस वे से अटैच करी जार फाइल हमने? form.xml में पेस्ट करके. हाँ, मेवन के थ्रू. उनकी Now dependencies we are going to discuss about how to read the data from the which file? XLSX file. XLSX file format. So let me create a let me check which file? XLS. This is the XLS file, but we need which file? Yes, we can take this file ABC. Copy this file and where we will keep? Desktop. On the project. Oh. With the project. Now let me create a file, new class Excel file read. So before reading the file, what we have to do? We have to create a Connection. 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 How we create the connection?
Using file command. File class. File class. File f equal to new file, Path and name. here, yes, we need to give the path of the file. Relative path. ये रही फाइल. नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है फाइल का. एक मिनट रुको. Let me rename the. वो लिखा ही लगा है, रीनेम करना होगा ये. हाँ, rename करना होगा. ठीक है. रीनेम करने के बाद प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे? रिफ्रेश द प्रोजेक्ट. So this is the path of the file. Copy it. Put a double dot Dot. and paste the Double path. dot. Right. Now after that, what do you mean by library? Which includes classes and methods. Yes. Which provides the which Class. provides the Built-in built-in. class and methods. Default class and methods. Yes. हाँ जी, सब लोग क्लियर है? Yes, sir. Okay. So we have a excessive workbook class. Which class? XSS workbook class. Workbook. In Apache PO. Excessive workbook. And in JXL we have workbook, right? Remember, we have a class here, workbook. In Apache POI, what is the corresponding class? XSF. XSSF. Yes, excessive workbook. Access equal to new excessive workbook. What we need to pass? File. Input stream Object of object. file class. Input stream object. Input stream here. So before that, we have to create the object of file input stream. Right? Click on the error, throws. Inside JXL, Apache POI, we have a XSF sheet. Inside JXL, there was a sheet class. Right? Right? Now we will create the object of which class? XSF Sheet. sheet. Right? Now access dot get sheet. We have two methods. Either we can use get sheet for passing the sheet name, and second one, Kunal, get sheet at. Here we need to pass the index number. Now, So what is the function of file and sorry, Divya. file input stream? Basically, here stream is a sequence of bytes. Stream is a sequence of bytes. We have to pass the stream object while creating the excessive workbook object. That's why we have created the object of input stream here. Right? Okay. Yes, sir. Now, int r. What we will fetch? What we will fetch? Number of rows. Physical number. Here we have get physical number of rows
Here we have which method was there? Get rows. Right? Here we have XSF row. Here we don't have any method, right, for a row. Here we have only cell method, right? Remember? Now Yes, bro. execute the loop for listing. This is the loop for which thing? For rows. Look for rows. Loop for rows. Inside sheet, what we have? Rows Rows and and columns. columns. Rows and columns. Workbook contains sheet. Sheet. Sheet Sheet. contains row. Row contains And cell. 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 Column. Right? Now we will create the object of which class? XSF row. Row. And which object we will use? Sheet object. Here what we will pass? XT. I XT. I. Row number. Now we will fetch the number of Cell. cells. Now we will execute the loop for which thing? Column. Cell or column, we can say. We will create the object of which class? cell class. Cell. That's cell. Right. Now that's it. Here we have XSF row, XSF cell. Here we have only cell. Here we have get physical number of Rows. cells. Here we have get columns. Right? Here we have get It's cell. string cell value. Here we have get content method. Right? Any doubt? You can execute it. I think there is no data in that file. उस फाइल में शायद कुछ डेटा नहीं है क्या? It's blank. Empty. Yes. Let me take some other file. F dot take. PPC Yes, we उसी can. file की. ये वाली लेके देखे. Which file format is this? Yes, we can take this file. Copy this file, and where we will keep this file? In the project. In the project. And what is the name of the file? Path related. Any doubt? सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज. हाँ जी, एक बार प्लीज चैट में अपडेट करो सब लोग. इसमें एक्सेल फाइल को कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा, मतलब क्लिप्स में कोई और वे नहीं है, मतलब फाइल वही पड़ी रहे. और हाँ हाँ, आप दे सकते हो. लास्ट टाइम हमने सेशन में डिस्कस करा था. इफ यू आर कीपिंग द फाइल at some other location, that will be a limitation. Why? Let's suppose Deepak has kept the file D drive. Mute kar lo ek baar. Deepak folder. Now I have shared my code with Kunal.
Kunal has to keep the file at same location, or he has to change the file path in the code as per his file path. Okay. ये लिमिटेशन हो जाएगी ना, है ना? सर एक So बार दोबारा that's बता why, देंगे क्या? क्या चीज? That's why तो सर it is good. एक मिनट रुको. It is good approach to keep the file where प्रोजेक्ट in the project. within the भाई project. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दीपक ने फाइल को रखा नहीं सर, डी ये ड्राइव नहीं, में. ये नहीं सर, वो सर जो आप एडिटर का सर थोड़ा एक बार वो टर्न हटाते हुए। सबसे पहले क्या करा हमने? कनेक्शन एस्टेब्लिश, then stream object, then workbook object, then sheet object, then fetch the number of rows, then execute the loop for rows, then row object, then fetch the number of cell of that row, particular row number, then execute the loop for cell, then created the object of cell and printed the content of the cell. देखो लूप कैसे चलेगा? आई की वैल्यू क्या आएगी इनिशियल में? 0. कौन सी रो का ऑब्जेक्ट बनेगा? कौन सी रो का ऑब्जेक्ट बनेगा? First row. फर्स्ट रो। फर्स्ट रो. लूप किसके लिए चलेगा? ये लूप किसके लिए चलेगा? सेल के लिए। फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल के लिए. फर्स्ट रो के हर सेल के लिए. फर्स्ट रो के हर सेल के लिए. उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. वन सेकंड वन रो में. किसके लिए? कौन सी रो का ऑब्जेक्ट बनेगा? सेकंड रो का. ये लूप किसके लिए चलेगा फिर? सेकंड सेकंड रो रो के के सारे सेल. सारे सेल. सारे सेल के लिए. आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 थ्री 3. थ्री 2 थ्री 2. 2 हो जाएगी और थर्ड रो सॉरी के हाँ। इंडेक्स है. क्लियर है सबको? अब तो अब क्लियर हो गया. अमित खन्ना भाई, अमित क्लियर है भाई? अचल आपको क्लियर है भाई? अनिरुद्ध? दीपक भैया, हाँ जी शिला भाई. दीपक भैया जो आपने वो फाइल की लोकेशन आपने दी है ना, एक बार स्क्रॉल अप कराना प्लीज। हाँ हाँ जी, हाँ जी. हाँ जैसे ये डॉट डॉट स्लैश एबीसी जो फाइल का नेम है, तो अगर मैं प्रोजेक्ट में रखता हूँ तो उस टाइम पे हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं क्या? ये जो बात है, हाँ, तो यहाँ से कैसे इसको प्रोजेक्ट के साथ इसका पाथ? ये प्रोजेक्ट के साथ ही रखी है फाइल. ये जो फाइल रखी है ना, अगर आप हाँ हाँ देखोगे ये रही फाइल f.xls. ये रही. राइट क्लिक करा इस फाइल के ऊपर, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से ये पाथ कॉपी करा था, ओके है ना? ओके, और थैंक यू। हाँ, रिलेटिव पाथ बनाने के लिए हमने क्या लगाया उसमें? डबल डबल डॉट डॉट. लगाया, हाँ। डबल डॉट लगाया था. ओके ताकि प्रोजेक्ट में से कोई भी डेटा रीड कर सके. ठीक है, तो अब ये था रीड का कोड. राइट का कोड डिस्कस करें. यस. यस सर. चलो, न्यू एक्सेल राइट. तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या करेंगे फाइल के साथ? क्या करेंगे? फाइल के साथ कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाएंगे. यहाँ पे फाइल का नाम मैंने दिया abc2.xlsx. उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाया? आउटपुट फाइल स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम आउटपुट। क्लास का. आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट. उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनाया? वर्कबुक XSSX क्लास। वर्कबुक क्लास. आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते यहाँ पे. अगर आप देखोगे ना, बताऊंगा उसका आगे यूज आएगा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का. क्या हम पास कर सकते हैं आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट? यहाँ पे देखना,
नो नो ब्रो। सर। नहीं कर सकते ना। नाउ किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? शीट। कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रिएट शीट। क्रिएट Create शीट। sheet. उसके बाद लूप चलाएंगे किसके लिए? रोज। Number of दिव्या, rows. आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी थी दिव्या? यस सर। चलो जी। हाँ सर जी हो गई थी। अनिरुद्ध। हाँ जी अनिरुद्ध, आपसे शालू ने कांटेक्ट करा था? हाँ सर, सॉल्व कर दिया उसका इशू। बहुत बढ़िया। क्या इश्यूज क्या थे उनके? सर एक्चुअली वो जावा का ही इशू था। जब कन्वर्जन हो रहा था ना मेवन प्रोजेक्ट में, अच्छा सिंपल जावा प्रोजेक्ट का, तो अच्छा वो क्या कर रहा था कि वो कुछ एरर्स ले रहा था वहाँ पे। एंड फिर अगर उस अच्छा। पर अपडेट प्रोजेक्ट कर दो ना, तो वो जो हमारे जितने भी फाइल्स, जितने भी क्या बोलते हैं, हाँ, तो जितने भी हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, तो उनको ना वो हम्म, गलत फॉर्मेट में उठा ले रहा था। पैकेज थे, पैकेज को नॉर्मल फोल्डर बना दे रहा था। अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए फिर वहां पे ना इशू आ रहा था। तो हो क्या रहा था कि टेस्ट एनजी जो थी, वो टेस्ट एनजी लोकेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो रीड करती है कि पैकेज कहाँ है, पैकेज के अंदर कौन सी क्लास है, क्लास के अंदर एड्रेस समझ कहाँ गया। कहाँ लिखा है। तो हाँ ये हाँ इशू हाँ आ रहा था। तो मैंने उसको एक ये कहा है कि वो डायरेक्ट एक काम ऐसा करे कि डायरेक्ट ना मेवन प्रोजेक्ट बनाए, रादर देन उसको कन्वर्जन दे। हाँ जी। चलो सही है। हाँ जी, अब किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे? एक्सेसिव रो का, और xt डॉट क्रिएट रो। आई पास कर दो। अब लूप किसका चलाएंगे? Cell. ये किसका लूप है? सेकंड लूप। Cell का. एक मिनट रुकना। ठीक है। हाँ जी, अब किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे? एक्सेसिव क्रिएट सेल, सेट डॉट सेट सेल वैल्यू। ठीक है। और ये आपका होगा। लूप के बाहर क्या करोगे? अभी डेटा कहाँ पे लिखा हमने? वर्कबुक में डेटा चला गया। वर्कबुक के डेटा को कहाँ राइट करोगे? इट विल मूव द डेटा फ्रॉम वेयर टू वेयर? वर्कबुक टू। Output stream. ठीक है। एरर पे क्लिक करके क्या करवाओगे? थ्रोस। उसके बाद fo डॉट राइट, fo डॉट फ्लश। ये क्या करेगा? इट विल मूव द डेटा फ्रॉम वेयर टू वेयर? Output stream to. फॉर क्लोजिंग द फाइल। ठीक है, अब इसको रन करो। सॉरी, प्रोजेक्ट का नाम, फाइल का नाम गलत दिया। यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना था। हो गया। प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो। फाइल बन गई f2 डॉट xlsx। हाँ जी, प्रोजेक्ट के फाइल पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, एंड वेयर वी विल गो? लोकेशन। हाँ जी, क्लियर। Yes. Sir. किसी का कोई डाउट? सर हम हाँ जी, कोई डाउट था?
तो कोड दिखा दो एक बार। हाँ जी, एक मिनट लो। नहीं होगी दिव्या, एक्लिप्स में नहीं ओपन होगी वो फाइल। सर जैसे प्लगइन अगर हम प्लग हाँ TXT वाली हो जाती है, बट एक्सेल नहीं होगी। ओके एंड सर अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जैसे एक फाइल से दूसरी डेटा, दिव्या सर आवाज कम आ रही है आपकी। मैं सर राइट करती हाँ जी, हाँ जी, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। हाँ जी, अलग अलग डेटा राइट करना है तो आपको क्या करना होगा, स्कैनर क्लास यूज कर लो। हाँ जी, क्लियर सबको? सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो। जो जेक्सल वाले असाइनमेंट थे ना, वो सारे के सारे किससे करने हैं आप? अच्छा कोड। अपाचे वॉइस से। ठीक है जी। ठीक है, तो किसी का कोई और डाउट? सर इफ यू वांट टू कॉपी द डेटा इन, हाँ जी हाँ जी कर सकते हो दिव्या। नहीं सर किसी का दोनों दोनों फाइल्स साइमल्टेनियसली ओपन नहीं हो रही थी, मतलब अगर मैं चेक कर रही हूँ एग्जैक्ट डेटा तो वो उसको ओवरराइड कर ले रहा था। नहीं नहीं, आपको करना क्या है, एक असाइनमेंट है, एक फाइल नहीं सर से रीड कॉपी तो करना है। हाँ जी कॉपी तो हो रहा था, बट अगर मैं दोनों फाइल्स को सेम टाइम पे ओपन कर रही हूँ ना तो वो नहीं हो रहा था। मैं कुछ ना मतलब कुछ एक्लिप्स ना की कुछ वो नहीं है, कुछ ना एक्लिप्स का कुछ इशू। मिस्टेक लास्ट में क्लोज करना होगा। क्लोज आपने शायद एक को करा होगा। अच्छा दोनों फाइल को क्लोज करना होगा। हाँ जी, दोनों को क्लोज करेंगे। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। असाइनमेंट क्लियर है सबको जो करने हैं हमारे को? ठीक है जी, तो ये आपके असाइनमेंट आज के, और फिर आगे कल मूव करेंगे। ये आज ट्राई करना प्लीज सब लोग। मैं ये रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं होगी शायद कुछ लोगों के यहाँ पे। यस सर। है ना? कोई इशू चल ही रहा है यहाँ पे। हाँ, है ही है सर। इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ भी दिक्कत चल रही है। अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों की अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू टीचर। ओके जी, बाय मीरा। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी।